इसको ले लो आप। हाँ 3 तारीख के बाद 3 तारीख को ही मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अभी 1 हफ्ते के लिए मेरा जंगल में जाना, नेटवर्क वेटवर्क कुछ नहीं रहेगा ना, इसलिए आपको मैं कर दूंगा। ओके ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप में एक बार हाय बोल दो आप, बस हो जाएगा। ठीक है ओके। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज ये एक दूसरा व्लॉग है जो हम खानापाड़ा के एक कैंप साइट है एंड कैंप एडवेंचर्स, थोड़ा कैंप साइट आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप लोग गुवाहाटी में हो या कहीं से भी आप गुवाहाटी में कहीं कैंप साइट ढूंढने के लिए आ रहे हो या तो आप अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, देन यू कैन कम टू एंड कैंप एडवेंचर्स। थोड़ा सा प्रकाश बता देगा, प्रकाश मेरे साथ है। बिल्कुल। सो अपना जो कैंप साइट है ये खानापाड़ा ताज विवांता से जस्ट 5 से 10 मिनट का दूरी पे है, 3-4 किलोमीटर है, मेघालय पहाड़ में है। तो कैंप साइट से वहाँ पे आपको पूरा गुवाहाटी सिटी का व्यू दिखता है। अमेजिंग सनसेट फ्रॉम देयर। देयर इज अ बिग रिजर्वोयर लेक टाइप जहाँ पे कायाकिंग कर सकते हैं लोग। पीपल कैन कम एंड स्टे, पीपल कैन पार्टी। हम स्टूडेंट्स का बड़ा पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब यू नो नेचर बेस्ड आउटडोर लर्निंग सेशंस वगैरह। कॉर्पोरेट पार्टी होता है, इवेंट्स होता है वहाँ पे, बर्थडे पार्टीज होता है, कोई कपल्स, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स साथ में आना चाहते हैं। तो बेसिकली सबके लिए हमारे पास वहाँ पे जगह है, बहुत बड़ा जगह है और बहुत ही नेचर फ्रेंडली जगह है। तो विल बी शोइंग यू गाइस कैसा जगह है वो चीज़। सो यस, अभी हम लोग खानापाड़ा की एंड कैंप एडवेंचर्स के कैंप साइट पे जा रहे हैं और हमारे साथ 2 और मेहमान अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। एक तो सेलिब्रिटी है जो असमीज फिल्म इंडस्ट्री या तो बोडो फिल्म इंडस्ट्री, जो असम के जो ट्राइब है ना बोडो, उसमें वो काफ़ी उसने सीजन एक्टर बेसिकली बहुत सारा मूवीज़ वगैरह किया है, तो उनसे भी मिलाएंगे। और एक फ्रेंड है मेरा, तो उनसे भी मिलाएंगे। सबसे मिलाते हैं पहले और खानापाड़ा कैंप साइट। चलो उनको आने दीजिए, पहले गाड़ी में बैठे उससे पहले मिलाते हैं सबको आपसे। सो दिस शी इज़ पेंसी, इससे अच्छी तरह बात करवाऊंगा मैं, मिलाऊंगा आप लोगों से। कम से बनना है। हाय पेंसी, प्रकाश यार। उठा दियो ना, एसी लगाई दियो। सो क्या बोलूँ पेंसी के बारे में। पेंसी आई थिंक शी इज़ क्वाइट रिनाउंड इन असम, क्योंकि वो फिल्म्स एंड टेलीविज़न में एसोसिएटेड है। वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे देगी। If you are I think it's better if you do a quick rapid. Yes, I don't mind. Yeah, just ask me. I will answer it then. Okay, like that. So, Yeah. Pansy, are you from Guwahati? कि तुम्हें हिंदी में बोलना है तुमको मगर? अच्छा ठीक है। Basically, like मैं कोकराझार से हूँ and I stay in Guwahati only. All right. So, I don't know if she is my fan or she is Bella's friend. That she has to. I'm Bella's friend. I really love Bella. So that's the thing. मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं, मेरा खाली प्रकाश ही दोस्त है। Nobody cares for us, Tom. Yeah, that is a fact, you know. So yeah, she always wanted to meet Bella, but unfortunately मैं लेके नहीं आ पाया because of work thing. वो तो नवंबर में हम लोग of course when she will be traveling with me, I think lot of fans हम लोगों से मिलेंगे। Right now, Pansy is actually going to one place to buy boots for her, क्योंकि कल वो जीरो जाएगी and हाँ। Yeah, I'm also moving tomorrow. That's nice. Where are you staying, Pansy? Well, I think I will stay high. Have you booked it or they have invited you like They have that? invited me. Oh, very nice. Yeah, she is a celebrity ये। Yeah, I didn't know. Yeah. इसका भी 90,000 प्लस फॉलोअर्स है। Great. और मैंने कल इसका देखा था 99.7 था, आज इसका 99.8 हो गया। और मेरा Such a stalker. no, I was actually following the count. मैं इसलिए काउंट फॉलो कर रहा था क्योंकि मेरा घट रहा है एक्चुअली, बिकॉज मेरा 1 लाख से ऊपर हो गया था एंड देन मेरा घटते घटते अभी 97.1 हो गया। आज शायद 96 हो जाएगा, शायद पता नहीं। प्रॉब्ली इंस्टाग्राम इज रिमूविंग द बॉट्स एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। एनीवे, তুমি এতিয়া তাত নমাই দিম তোমাক। If you want to come to Khanapara, you can tell us. Like এতিয়া তুমি Yeah, like you can come to the campsite. You can just see our campsite. It's a beautiful place. মই বেসিক্যালি ভিডিওটোই বনাব যাওঁ এতিয়া তাত। You'll get to see full view of Guwahati, and then there's a nice reservoir, big lake kind of thing. Beautiful place. Yeah. So এতিয়া তুমি you want to buy the boots at first or you want to go there at first? because তাত অলপ টাইম লাগি যাব। So তুমি কি কৰিব বিচাৰিছা? I'm confused. I want should to go go- there and see. yes, Because yes. like sunlighter পিছত মানে ভাল নাপাবা তুমি। Yeah, the Yeah. view and all. So anyway, let's go there and let me try to show you how does camp adventures in the evening at Khanapara कैसा दिखता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। All right, it's we are still building this camp. It's a very like slow process. You
we are more focused towards this being sustainable and all. No? So मैं खोल लूँ जगह? yeah, please. Thank you. ओके सो दिस इज़ एनकेम्स। पूरा देखिए कितना सुंदर है। मैं अभी थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ। डैट वाज द एंट्रेंस। लेट मी शो यू फ्रॉम हियर। देखिए एक यहाँ पे झील है, आई मीन एक पॉन्ड है, और साथ में दे हैव लॉट ऑफ कैम्प्स हियर। एक एक जाके दिखाएंगे अभी। एंड हियर तारिक भाई जो आपको पिछले ब्लॉग में दिखे थे फिर से आ गया है। तारिक भाई, हाउ इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द ESD? जस्ट टेल मी फ्रैंकली। So far, so good. Servicing is good. I just cranked my starter motor, which is worth of 8,000 rupees. But just because it was under warranty, I got it fixed for free. So have you rode Himalayan before? Himalayan? Yeah. Yeah, I So did. how do you compare both of them? I like this one a little bit more better than Himalayan because I see the power. You see the power. Yeah. I'll take a test drive. Okay. Sure, definitely. Right. Why not? Let's start with Spency. Hey, hi. She's again a Bella's fan. Oh, Oh. okay. And Tariq, I know him. He used to be in Bangalore. Hyderabad. Hyderabad. Sorry. Yeah. So he also has a very क्या बोले? What? Danny. Danny. जो तो आप लोगों ने कल देखा था. So we have a friend here. His name is Sohan, all the way from Bangalore. He has come to attend Zero Music Festival. Right now we are going to visit this campsite. Let's go. It's a monsoon time and How do you like the place? Can you like it? ভালো লাগছে? It's very nice. So you can মানে কি আৰু এইটো তো মোৰ চিনাকি হয়. If you guys want to sometimes come and chill এনেকুৱা জেগাবোৰ, you guys can come. আৰু এইবোৰ পানী it's natural মানে rain water হয়. Let's go towards that side. I'll be showing you the campsite. अभी थोड़ा अंधेरा होने वाला है ना, तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ. बहुत अच्छा जगह है. You can enjoy a lot. Let's go. It's lightning also. थोड़ा सा ठंडर. देखिए यहाँ पे भी लोग छांग वगैरह बनाया हुआ है. You can go up there. This is the proper road. रात को पूरा लाइट वगैरह जला. रात को लाइट जलता है. रात को लाइट जलता है ना, पूरा लाइट जलता है. योय. सो दैट्स द बाथरूम. सबसे पहले जब भी ऐसे कोई कैंप साइट वगैरह में आते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोग देखते हैं बाथरूम. सो बाथरूम इज़ देयर, नथिंग टू वरी अबाउट. ओके, नाउ लेट्स थोड़ा सा आप लोगों को कैंप्स वगैरह टेंट्स वगैरह दिखाते हैं. देखिए कितने सारे टेंट्स हैं यहाँ पे. वाओ, ऑल एल्पाइन टेंट्स ऑलरेडी शेड के नीचे है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रेन. ब्यूटीफुल. देखिए नाइस. इस तरह भी देखिए. ओके, यू कैन गो डाउनस्टेयर्स फ्रॉम हियर. यहाँ से भी सीधा जा सकते हैं. नाइस, ब्यूटीफुल, एक्चुअली वेरी क्वाइट. एनकैम्प एडवेंचर्स का ये वाला जो कैंप साइट है वो लोकेटेड है गुवाहाटी के खानापाड़ा में. बेसिकली इट फॉल्स अंडर मेघालय. इसके रेट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ. अगर आप रहना चाहते हो तो 999 रुपये, मतलब 999 रुपीज़ पर पर्सन, नॉट पर टेंट, पर पर्सन. सनसेट हाइक जो आप लोगों को मैं आगे दिखाऊंगा वो है 299 रुपये, दैट मीन्स 299 रुपीज़. बोटिंग और कायाकिंग अगर आपको करना है तो 499 रुपीज़. ब्रेकफास्ट अगर आपको चाहिए तो 250 रुपीज़. लंच इसका है 499 रुपीज़. और डिनर जो होमली ट्राइबल फूड है वो है 499 रुपीज़. पीपल कैन ऑल्सो बुक द एंटायर स्पेस फॉर बर्थडे पार्टीज, स्कूल इवेंट्स, कॉर्पोरेट पार्टीज और एनी अदर इवेंट्स. oh. Yeah, tell me once again. So we have like around 25 similar properties. Some are basic camps, some are luxury camps, some are cottages. Right. Across Northeast India, Nepal and Bhutan. Nepal also, we have stayed in Nepal, Nama. So that is like same only. Mama guy has come up with another guest house also, no? They have 5 properties. They built 5 properties now. They have resorts, they have hostels, they have homestays, they have camps. So, अभी कहाँ जा रहे हैं? We're going for the viewpoint now. Once we see there and then come back because it will be dark otherwise. Beautiful property, no? Can you here to say something? No. She actually इसको ये तो कैमरा के सामने रहती है, so probably इतना ज़रा uncomfortable नहीं होगी if she
comes in front of my videos. Although हाँ इससे I don't know एक थंबनेल मुझे इसके साथ बनाना पड़ेगा तभी मेरा वीडियो ज़्यादा देखेगा लोग. कम पेंसी हमसे मिलने बहुत जल्दबाजी में आई थी. जितना भी क्वेश्चंस मैंने सोच के रखा था पूछ नहीं पाया, बट फिर भी मैंने बाद में पूछा एंड मुझे पता चला कि पेंसी अब तक बहुत बोडो मूवीज में काम किया है, जैसे कि सीजाओ, जुलवी द सीड, डस्क एंड मैनी मोर. एंड अभी हमारे फेमस असम का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर कैनी बसुमतारी के साथ भी 4 सिस्टर्स का भी काम कर रही है पेंसी. बाय द वे कैनी बसुमतारी कौन है अगर आप लोगों को पता नहीं है तो वो वही है जिन्होंने लोकल कुंफू 1, 2, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर बोडो जैसा सिनेमा बनाया है असम में. वही नहीं, फिलहाल ही में ही इंडिया का सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ जवान में भी साइड रोल किया था कैनिदा ने. তোমালোকৰ ঘৰত আছে নেকি? কিমান আছে? এটাই মানে ইয়াতে গুৱাহাটীতে? কোকৰাঝাৰত কোন কোন থাকে? Papa and my lovely son, my dog. Okay. তুমি এজনী ছোৱালী? কেৱল? বা আছে ন? Okay. My dog is really aggressive. Aggressive? কিয় বা? I don't know. He's like that only. মানে সৰুৰ পৰাই নে? সৰুৰ পৰাই। এনেকুৱা মানে খোলাই এৰিছা নে তাইক? খোলাই এৰিছোঁ। But still he is aggressive. কোনো আহিব নোৱাৰে ঘৰত। Okay. কামুৰি চামুৰি দিয়ে। আৰু মোৰ বাঘ বহুত বেয়া পায়। হয় নেকি? আচ্ছা থাকে কিছুমান. মোৰ পেহীৰ ঘৰত এটা আছে এণ্ড হি ইজ লাইক হি মানে অকল কেইটামান মানুহক চিনি পায়. হি ৱান্টছ টু প্লে উইথ দেম, আদাৰৱাইজ বেলেগ মানুহ যাব নোৱাৰে তাত. মোৰো এনেকুৱাই মানে বাঘ খুবেই বেয়া পায়, তাৰপিছত বাহিৰৰ মানুহ কোনো ঘৰত সোমাব নোৱাৰে. অ'কে. আৰু আমাৰ যোন ৱৰ্কাৰ্ছ আছে অ'কে সিহঁতৰ লগত বহুতেই ভাল. অ'কে অ'কে নাইচ. Shillong goes to this side. Okay. This side is Shillong. That is airport side. Airport side. This is main Guwahati city, GS Road. Okay. This is the main Guwahati city. Yeah, But so far from the airport. This is very far. This is main Guwahati. Okay. So the river is you see that Brahmaputra. Brahmaputra river. You see the first layer of mountain, the second layer of mountain. Right after that is the river Brahmaputra river. Okay. So the city ends there, and the other side is North Guwahati. North Guwahati. Okay. So it is separated by a river. Okay. So this is GMC, the Guwahati Medical College, the tower you see, right? Yeah. That is the whole এবাৰ ছানছেটটো দেখি পায়. Okay. Sun sets here only. Straight here, but now it's cloudy. You can see the hues over there. Yes. Those hues. Nice. There's a nice point there. A little. Oh, no, yeah, you should go ahead with lot of beautiful. You should capture, man. You need to take all the memories with you. So, Sohan, you're originally from Bangalore? Yeah, like you can say that because I've been there like around 8 years, Okay. and the other place before that I stayed for 10 years. So, you are So from Karnataka. Karnataka only. You know, there are certain problems that is going on in Karnataka. Like, what I heard is in Karnataka, the people of Karnataka, the local wants the localite to speak in Karnataka only. As in, that's Kannada, right? Yes. So, could you tell me why, or why is it, or if someone who stays there from a different place, is that? Oh, be careful, man. So, is that applicable to them also? What, like someone who is staying from a different place, or like suppose I am from Assam, will it be? मुझे भी बोलना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है. Because in Bangalore it's like more everyone's just speaking English basically, and most of the outsiders are like in the Bangalore. Okay. Yeah. Right. Yes. It's like they have outnumbered the locals in Bangalore. Definitely. So tell me one thing. So how long have you been traveling? So I just started from like the Goa. Oh, is it? Yeah, like Yo. the solo traveling. It's like very much bushy right now. Yeah, let's move. I think it's चल ऊपर से थोड़ा और टॉप व्यू आएगा. तो वहाँ से तेरे कैंप साइट में थोड़ी देर बैठ के वो करते हैं. फिर बारिश होने जा रहा था, इसीलिए हमने डिसाइड किया वापस जाने के लिए टू द कैंप साइट.
आने वाले दिनों में आपको दिखेगा हाउ क्लोज सोहन हैज बिकम विद अस ड्यूरिंग आवर जर्नी टू जीरो म्यूजिक फेस्टिवल। तो आप लोगों को पेंसी जो कि एक फेमस बोडो एक्टर है उनसे भी मिला दिया, खानापाड़ा कैंप साइट का इन्फॉर्मेशन भी दे दिया। अगर आपको खानापाड़ा कैंप साइट का थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फुल डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यू कैन कॉल देम, यू कैन फाइंड द गूगल, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक लिंक, यू कैन कनेक्ट विद एनकैम्प एडवेंचर्स हाउएवर यू वांट। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जॉय आई असम।